औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर मुक़द्दस फातिमा यूपीएस छतकड़ी। आज डेट है 9/7/2021। क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक है लाइट। कल हमने इधर तक पढ़ा था रिफ्लेक्टर रे तक। इससे आगे है ए रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन. In relative, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. Draw lines show the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degrees to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as the normal to the reflecting surface at that point. The angle between the normal and incident ray is called angle of incidence. बच्चों ये उन्होंने दिखाया है जैसे ड्राइंग द नॉर्मल जी एक लेना है जो ज्योमेट्री बॉक्स से होता है, वो हमारा प्रकार वगैरह, उसको ये ऊपर सीधी लाइन करनी है। इससे देखकर इससे पता चलता है कि किस तरह ये बनाते हैं ड्राइंग द नॉर्मल. एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फिगर 12.3 measure the angle of incidence and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incidence. Enter the data in table 16.1. जैसे reflected ray है, incident ray, normal, angle of incidence and angle of reflection. Table 12.1 angles of incidence and reflection. Angle of incidence, angle of reflection. यहाँ ऊपर है, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरियड आउट केयरफुली, इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट अस परफॉर्म another activity on reflection. What would happen if I throw the light on the mirror along the normal? Activity 12.2. Perform activity 12.1 again. This time use a sheet of stiff paper or a chart paper. Let us sheet project a little beyond the edge of the table. Figure 12.4. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. Bend that part of the projected portion on which the reflected ray falls. Can you still see the reflected ray? Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? What do you infer? बच्चों ये इसके बारे में है, लाइट के बारे में, कि इन्होंने जो एंगल बनाए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, ये जैसे रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल इंसिडेंस रे, उसके बारे में है. आज हमने इतना ही पढ़ा. कल इंशाल्लाह इसके हम आगे भी पढ़ेंगे. बाकी वस्सलाम.